especially the younger generation. You should speak from your heart and not something which has been prepared by somebody else, especially a speech which is prepared by anyone else. I'm very happy, I have addressed larger gatherings. बहुत समय वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब, मैं भरे हुए हॉल्स को एड्रेस करता हूँ, लेकिन वहाँ में पॉलिटिकल भाषा बोला जाता है और मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिक्स नहीं है. मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक है, मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स है, मेरा बैकग्राउंड होटल्स है. एक्चुअली जब मैं 1997 में मुझे लॉ करना था और मैं NLS में भी एडमिट हो गया था, लेकिन उस समय मेरे पिताजी का हेल्थ बहुत ख़राब हुआ. ही हैड टू गो इन 1998-99 बाईपास के लिए. तो मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर में मैं NLS में मैं परस्यू नहीं कर पाया. तब मुझे शिलोंग आकर तब I did my normal education there. लेकिन मेरे अंदर हमेशा एक रिग्रेट रहा है कि I could not pursue law. But one thing very interesting, जो बहुत लोगों को मालूम नहीं है, कि I have studied law on my own. So today, many things which I do politically, it's backed because of my understanding of constitutional law. And मुझे to speak to all the youngsters here, इसमें मुझे ज़्यादा खुशी आती है क्योंकि यहाँ में मैं आपसे डायरेक्टली बात भी कर सकता हूँ. I can talk to you directly and I can also tell you what is in my heart. And I think बहुत समय आप लोग जब हमारे जैसे लोगों से मिलते हैं, then you have a different sort of expectation. But to be very honest, मैं यहाँ में मुझे पहले आना था, I didn't come. But अगर आप मेरे संग थोड़ा समय बिताएंगे तो maybe one day आप मुझे यहाँ में इनविटेशन देंगे, नॉट फॉर फ्रेशर्स बट एक दिन आपके क्लास में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए. आई विल सिट डाउन विथ यू ऑल. मैं 2-3 घंटा बिताऊंगा आपके साथ, हम लोग इंटरेक्ट करेंगे. आपका भी कोई सवाल हो सकता है, इवन यू कैन हैव सम क्वेश्चंस एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर, बिकॉज like I want to hang around with you and understand you. I think if you also understand me and you interact with me, maybe you'll also be able to understand me better. You said the word blessings 3 times in your welcome speech. Blessings can only come from God, not from people like us. But yes, we can definitely pray that this university becomes the best university in the northeast of India. And to do that, we need to ensure 3 things. First, faculty has to be the finest. Second, the students should feel that they are being heard and there is just not education but extracurricular activities, so that there are field trips and the students understand and feel not only in Tripura but across India. So that should be ensured, because the idea of a university is not just in classrooms but outside classrooms. And third, and the most important thing, no political interference, because a university should be autonomous and you should be allowed to think independently and freely for the country. You gave me the preamble of the Constitution of India, and the preamble says many things, but it is not practiced. I myself at times feel dejected in a democratic process in India, and that is because democracy is not only made by politicians and elections. Democracy has different pillars. Media is one, civil society is one, but judiciary is also there. And today, I feel sometimes that our judiciary needs to be more vibrant and active. Of course, politicians like me, we don't want to see an active judiciary, but the Indian in me would like to see
checks and balances in our system. तो नेता बनकर मुझे कंट्रोल करना है सब चीज को, लेकिन हिंदुस्तानी अगर मैं हूं तो मुझे चेक्स एंड बैलेंसेस का इंश्योर करना पड़ेगा। इसके लिए डेमोक्रेसी में आप सिर्फ पॉलिटिक्स को रखेंगे, इलेक्शंस को रखेंगे तो नहीं होगा। मीडिया का दरकार है, सिविल सोसाइटी का दरकार है, जुडिशरी का दरकार है, और हाँ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन का भी दरकार है। लेकिन हमने क्या किया है इन आवर कंट्री, वी हैव ओनली पेड अटेंशन टू elections and politicians. That has to change. Today, most of our leaders in other countries, hello, your daughter's too cute. She's looking at me in her. Most of our leaders in our country are not lawyers, but have some connection with judiciary. You know what? They all have criminal cases. तो लॉयर तो बने नहीं, लेकिन कोर्ट में गए हैं एज क्रिमिनल्स। डू यू थिंक दैट दीज पीपल कैन देन इंश्योर फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी फॉर अ पीपल? जिसने संविधान को तोड़ा है वही आज संविधान का बारे बात करता है। सो वी आर ऑल्सो अ नेशन ऑफ हिपोक्रेट्स। अभी कोई सवाल पूछेगा, अरे लेकिन प्रद्युत आपके पार्टी में भी तो लोग हैं। लेकिन अगर मैं आज सच नहीं बोलूंगा तो सच कब बोलूंगा? And when you admit that you are not perfect, when you admit that you have also got flaws in your own setup, that's when you become a better human being, a better leader. A person who does not admit that there are mistakes and does not admit to his own personal mistake or her own personal mistakes, how do you go beyond? So I believe that we need to innovate, inculcate and introspect in our legal process. Today so many, आपने ड्रग्स के बारे में बात किया, मैं बहुत जगह में गया हूं जहां में हमारे इंडिजिनस ट्राइबल एरियाज में लोगों को जेल में रखा गया है फॉर व्हाट क्राइम? आपने मैरिजुआना या गांजा बेचा है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें भी डिबेट हो जाए कि गांजा को या मैरिजुआना को आप लीगलाइज ड्रग कीजिए, क्योंकि असली जो ड्रग्स हमें मार रहा है वो मैरिजुआना नहीं है, वो कुछ और है। और उसको कौन चला रहा है? कोई गांव का गरीब जनजाति नहीं, नो इंडिजिनस पर्सन इज हैंडलिंग। पॉलिटिशियंस का पूरा बिजनेस है। याबा टैबलेट्स जो आता है वो बॉर्डर के उस पार से इस पार कैसे आता है? किसका प्रोटेक्शन है? वो पैसा किसके जेब में जा रहा है? पॉलिटिशियंस। वही पॉलिटिशियन जो सफेद कुर्ते में आपके सामने आते हैं, देशभक्ति का आपको ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन उनका तिजोरी भर रहा है ड्रग्स मनी के साथ। अगर त्रिपुरा में हमारे पास इंटेंशन है ड्रग्स को हटाने के लिए, नशा मुक्त त्रिपुरा जो बोलते हैं, तो आप बड़ा मछली को पकड़िए ना। लेकिन हम ऊपर से दिखाते हैं कि हम ड्रग्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, नीचे से एक सिस्टम बन चुका है। सेकंड, कौन है ये जो सिस्टम को चला रहा है? हाँ, इंडिया में तो हमारे लीडर्स हैं, लेकिन बाहर से क्यों त्रिपुरा में भेजा जा रहा है या मणिपुर में भेजा जा रहा है? इन ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। व्हाई? इट इज डन बाय कंट्रीज हु हेट अस। इट इज डन बाय ISI. It is coming through Myanmar. It is coming through Bangladesh. And why are they sending drugs to India? Because they want to spoil the next generation of India. Because India is the biggest success story of a democracy. Judiciary has collapsed in Bangladesh. Sheikh Hasina has been sentenced to death without her even being in trial. And in India,
Ajmal Kasab, 1 year, got a free and fair trial, then we sentenced him. पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा, बांग्लादेश में ऐसा नहीं होगा. लेकिन yet these countries know that the only way they can destroy India is by creating cross-border terrorism, drugs, counterfeit money, black money. And who is supporting them? The same people who are supposed to protect our constitution. So I appeal to all the younger generation. You know, most political leaders जो यहाँ में आएंगे वो आपको कहेंगे कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, मेरे पार्टी में ज्वाइन करो, देश को बदलते हैं. मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने प्रोफेशन में रहिए और आप अपने प्रोफेशन में अपने आप को इतना अच्छा कीजिए कि एक दिन अगर कोई गलत काम कर रहा है, वो देश का कोई भी मंत्री हो, आप उसको जेल के अंदर डाल सकते हैं. Because today you are lawyers, one day you will become judges also. And even if you don't practice law, if you have a background of law, आपको अपना अधिकार के बारे जानकारी रहेगी. हमारा अधिकार, your legal right, your constitutional legal right is something that everybody should be aware of. बहुत लोग मीडिया में, वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब मेरे खिलाफ उल्टा सीधा लिखते रहते. ये सांप्रदायिक है, ये कम्युनल है, ये सिर्फ तिपरासा के बारे में बात करता है. मैंने आज तक किसी के खिलाफ बात नहीं किया, मैंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात किया. लेकिन त्रिपुरा में अगर मैं मीठा मीठा रसगुल्ला जैसा बात करूं तो ठीक है, लेकिन जिस दिन मैंने थोड़ा कड़वा सच बोल दिया कि जमीन भूमि का रक्षा का बात हमें करना चाहिए, तो सबको लगता है कि सांप्रदायिक है, क्योंकि सब ने इससे पहले बात नहीं किया. यू ऑल आई वॉन्ट, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप कभी मुझे बुलाइए यहाँ में. यू इन्वाइट मी हियर एंड आई विल सिट डाउन विद द स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट त्रिपुरा स्टूडेंट्स, एवरीवन. उत्तर प्रदेश से हो, बंगाल से हो, त्रिपुरा से हो, मणिपुर से हो, कोई भी हो. आई सी अ मणिपुरी गर्ल राइट देयर विथ हर, एंड आई विल टॉक टू यू. और अगर आपको लगता है मैं उसके बाद भी गलत कर रहा हूं, देन दैट इज योर व्यू. बट बिना किसी को सुन के आप किसी के फांसी में आप लटका दोगे मीडिया ट्रायल के थ्रू, ये तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नाइंसाफी है. टुडे आई फेस मीडिया ट्रायल ऑन अ डेली बेसिस. Here you are calling me His Highness. I never asked anyone to call me Maharaja or His Highness. My people love me and call me Bubagra, good enough. But people have no qualms calling Shah Rukh Khan Badshah. Badshah क्या है रे? Vijay Mallya, king of good times. Right? You're giving names to people, but when somebody, poor person from village calls me Bubagra, they have a problem. Shouldn't have problem. But I don't ask them, I don't demand. If someone calls me, they call me. आजकल तो पंजाब से मैंने 2-3 लड़के को मिला है, उन्होंने अपना बेटा का नाम प्रिंस रख दिया, या युवराज सिंह. Right? We have names of students of Prince and Yuvraj. Yeah, युवराज, right? अरे यार, प्यार से हर बाप हर माँ अपना बच्चे को राजा समझता है. नो बिग डील. हमको इतना टची होने का दरकार नहीं. लेकिन हाँ, कोई अगर अपने माँ बाप का नाम को इस्तेमाल करके जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करे, वो गलत बात है. लीगल राइट्स, ऑल ऑफ यू, ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स, I'm so happy. You may be a few hundreds here. I'm very happy. And I'm telling you, this is your age, this is your time. गलती करना है, करो. अभी गलती नहीं करोगे तो कब गलती करोगे? 50 के बाद. बट गलती करके सीखो भी. जिंदगी में मैं personally, I have done a lot of mistakes. And whenever I have accepted my mistakes, I have improved myself. But whenever I have resisted admitting to a mistake committed by me, inside
I have become a smaller human being. I am not identified by the palace I stay in. I am identified by the work I do in the villages. You are not identified by the car you are seen in. You are identified by walking with the poorest man in your village for their constitutional rights. And your biggest strength is your integrity, your honesty, and your character. We lit the lamp here. The lady in the backstage, what's your name? Saloni. Saloni. Where are you from? UP. UP se hai. You quoted Lord Buddha. You know, Lord Buddha is known for giving up everything to gain something which is far more important. The day I decided to give up my personal ambition, I gained wisdom. And here let me tell to all the faculties, आप लोग टीचर्स हैं, आप लोग गुरु हैं, लेकिन मैंने ज़िंदगी में बहुत इंटेलेक्चुअल्स को मेरे संग मुलाकात हुई है. And some of the most miserable people are intellectuals because they have forgotten how to smile and laugh. And some of the happiest people I've met may not be intellectual, but they are wise because they are seeking happiness. A teacher should enter a classroom smiling, because when the teacher wins the heart of a student, the student will listen to you all. But when you, maybe the most brilliant mind, knows everything, you walk into a classroom unhappy, sad, miserable, no matter what you say, the students will not listen to you. So, one thing I learned from my teacher, my Guruji, was कि जब भी कुछ करना है, हंस के करो, दिल से करो, और उसके बाद ये मत सोचो कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, परिणाम क्या निकलेगा. आपने अपना सबसे अच्छा एफर्ट लगाया, वही इंपॉर्टेंट है. Many of you will become lawyers. Many of you will win your cases. Somebody will lose. हार जीत जिंदगी में है, लेकिन जब भी आप कोर्ट में कदम रखोगे, ये सोच के रखो कि आज मैं किसी को न्याय देने के लिए जा रहा हूं, किसी को बचाने के लिए जा रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं. Lawyers have a very bad reputation, I know. They are said, like, here lies a lawyer in a tombstone. Yet again, there are many lawyer jokes also. But you all are very important because you can protect the weakest and you can punish the strongest. That is the power that you all have. But that power cannot come in a classroom. It has to come in your mind. It has to come in your heart. मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? कुछ गलत बोल रहा हूँ? लेकिन बहुत लोग बोलेंगे पॉसिबल नहीं है. भाषण देना आसान है, जिंदगी में प्रैक्टिकलिटी करना पॉसिबल नहीं है. बहुत लोग बोलेंगे, पूछेंगे, लेकिन आपका उम्र क्या है? 25, 22, 21, 23, 25. अगर 20, 22, 25 में ही आपने गिव अप कर दिया, जब तक आप 50 के होंगे ना, आपके जिंदगी में कुछ जिंदगी का जीने का लायक ही नहीं होगा. सो एटलीस्ट व्हेन यू आर यंग, ट्राई, debate, talk, stand up and speak out. Nobody is here to win a popularity contest, but you can still speak for your people, no matter how small, how unrepresented they are. And in the end, आपका hostel आ रहा है, and then I just found out that there are students who need some scholarship. Let me try to speak to my TTAADC so that we can at least give some scholarship to some of our students. Maybe you all don't need money, but maybe even from my own pocket.
from whatever my earnings are. I don't earn as a politician, but I earn as a hotelier. I earn from my personal business. Even if I can give something, so that at least 1 semester or 2 semester का scholarship थोड़ा सा आ जाता है, maybe the students can then save that much money. माँ बाप का इतना कष्ट नहीं होगा, and you can use it for something else. So that is my offer. Sir, आप blessings पूछते हैं, blessings देने वाले हम नहीं हैं. भगवान ने blessing दिया, इसके लिए मैं यहाँ में खड़ा हूँ. तो आज अंत में ईश्वर ही सबको सब कुछ देता है, लेकिन मेरा काम है कि मेरा कर्म ही मेरा काम होगा. Finally, I have to go, I know that, but I would again request the teachers, all of you all, please invite me, but don't invite me as a chief guest. Please invite me as a friend of yours. Please don't invite me to speak in an auditorium. Please invite me to speak in a classroom. I would also like you all, because you all have to learn how to argue. You all are lawyers. You ask me questions, ask me tough questions. Grill me also. I'll also grill you. But let's have a two-way conversation. Let it not be a monologue. Let's have a two-way conversation. Maybe I will understand you better. Most of you all are Gen Z, right? So I'm also learning new words like Riz means charisma, right? I also know what this means, and you know all that stuff, right? Saranghe and all that stuff. So let me learn from you. I can learn from you, you know. And maybe you can learn something from me also. But let the conversation in a democracy always continue. That's all I have to say. Thank you very much, Vice Chancellor Saab, Marilyn. It is because of your hard work that I'm here. Registrar Saab, you're from Uttarakhand. We have a bonded history together. And to everyone here, thank you. I'm humble and I'm truly happy. सच में दिल से मैं बोल रहा हूँ. I'm very happy that you all invited me. आपने इतना सम्मान दिया मुझे that I will keep this in my heart. And thank you so much. And I wish to come back here again. And your hostel is starting in January. So anything I can do for that also. Hostel में television set है कि नहीं, क्योंकि हमको तो anything I can do from my side, personal side. मैं return में कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ आपका प्यार मांगूंगा, बस. Thank you so much to all my Bubagra people. All my Bubagra people, stand up, don't be afraid, be positive. Don't look at negativity, because in the end, love and resilience and courage will always win. Belai belai no hambai, khulungkha. God bless you. Dhanyavad. Jai Hind.